Welcome to the OMEN channel. Today I received this HP OMEN in dead condition. It's a i7 10th generation with RTX graphic. The customer said the other shopkeeper tried to fix this but failed. Let's check with power supply as a charger. It's showing 0.064 ampere. It's consuming 0.064 ampere, but when I press power button, nothing happened. Let's check this laptop. The shopkeeper said to the customer he need to replace this motherboard. (19 volt) on DC jack, 18.82 volt on first MOSFET output, 19.4 volt, MOSFET gate, 19.4 volt. That means the first MOSFET is okay, and there is some burn component. Let's check the burn component. (18.8 volt), no voltage at output. Let's clean this component. I'm using MBC motherboard cleaner. The component has 4 points. I think it's a current sensing resistor. Let's remove and change the resistor. As you can see, the 4 point
first, second, third and fourth. It's a current sensing resistor pad. Current sensing resistor have four pad. Two for voltage travel and two for current sense. I have a current sensing resistor. Let's replace. The laptop has came from backward area. There is a small village shop who trying to fix this laptop but failed. As you can see, the condition of this laptop is changed. Current sensing resistor input 18.9 volt, output 18.9 volt. I'm going to start this laptop. As you can see, it's consuming more ampere. I have 19 volt adapter cable, that's why it's not consuming more ampere and suddenly turn off. We need to connect the battery to support the power. Let's try to power on again. As you can see the display, the job is done. Now in हिंदी, मेरे पास ये HP ओमन का लैपटॉप आया था रिपेयरिंग के लिए. तो इसमें प्रॉब्लम थी कि इसके
ये डेड था, मेरे पास जब ये आया था डेड कंडीशन में था। और इसकी यहाँ पे जो ये करंट सेंसिंग रजिस्टर लगी होती है, आपको ये इससे पता चल जाएगा। जैसे ये रजिस्टर है, करंट सेंसिंग रजिस्टर है ये वाली, और इसके नीचे इससे ये देखें 2 पॉइंट आ रहे होते हैं। यहाँ से ये देखें 2 पॉइंट इसके अंदर जा रहे हैं, जो कि चेक करते हैं यहाँ से जो करंट ट्रांसफ़र हो रहा है, आया वो ठीक ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि उसकी वोल्ट वगैरह ठीक है। तो इसको ये इसको कहते हैं करंट सेंसिंग रजिस्टर। तो ये करंट सेंस करके आगे आईसी को सेंड करती है डेटा। अगर ये ख़राब हो तो तब भी ये ठीक नहीं होती, तब भी लैपटॉप ऑन नहीं होता। आपने जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे ये रिपेयर किया हुआ है, ये काफ़ी जगह से ना रिपेयरिंग की हुई थी पहले। यहाँ पे रिपेयरिंग हुई हुई है यहाँ पर, और उसने वहाँ पे चेक करवाया था। वो था एक बैकवर्ड एरिया था गांव का शायद, तो वो छोटा मोटा कोई कारीगर होगा जिसको उसने ये चेक करवाया लैपटॉप। हालांकि ये लैपटॉप बड़ा अच्छा है, गेमिंग लैपटॉप है, और i7 10th जनरेशन है, लेकिन वो उसको समझ नहीं आई होगी इसकी, तो उससे ठीक नहीं हो पाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।